Hello everyone, Namaskar. Welcome back to my channel Cruise Stories. As we all know that Swiss Air is hiring for male and female cabin crew. Yes, Swiss Air, an international airline, is hiring aspirants of India. So this video is going to be based on Swiss Air eligibility criteria about Swiss Air, what documents you need for the application, and all of the information related to that, and also your salary expectation. So I will cover all of these things in this video. So please watch this video till end, and if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel and also share my channel with your friends. So without wasting time, let's get into the video. So we will be talking about the airline. Swiss Air is a subsidiary of Lufthansa Group. So what is Swiss Air? Swiss Air is Switzerland-based airline, though you will be based in Mumbai or Delhi, and it was founded in 2005. It probably flies to 100 destinations, and approximately this airline has 88 aircraft that include 330, I mean 320s, 321s, 777, and now they have ordered 350 fleet. So it's going to be very interesting, very fun. And it's a very strong company because it's a part of Lufthansa Group. It's a subsidiary of Lufthansa Group. So Swiss Air is a very strong company. Salary expectations. Okay, I'll come to this point at the end of this video. First, I will talk about the eligibility criteria. So, male and female both are eligible for this position. And Swiss Air is looking for 12,000 crew from, I mean, from all across the globe. And so it's a very good opportunity. They are hiring so many candidates. So just go for it. It's a very good opportunity. And the age criteria is 20 to 25. You must be fluent in Hindi and English. तो बहुत सारे लोग विदाउट प्रैक्टिसिंग हिंदी मतलब इंग्लिश अच्छी होती है बट हिंदी का प्रैक्टिस नहीं करते और चले जाते हैं. सो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज हिंदी में भी कन्वर्सेशन का प्रैक्टिस करें आप लोग. और इवन इनके असेसमेंट के लिए भी आपको अच्छे से इन दोनों लैंग्वेजेस की फ्लुएंसी होनी बहुत ज़रूरी है और अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है लैंग्वेज पे. And the height criteria is 155 centimeters for both male and female, not only for female. I'm repeating this again. 155 centimeter for both male and female. So it's a very good opportunity for male who doesn't get opportunity in Indian Airlines because of the higher uh, criteria for the height. It's very nice, so go for it. एंड ऑल्सो अगर आप दिल्ली से है और आपकी पंजाबी अच्छी है सो आप ये चीज़ अपने सीवी में ज़रूर मेंशन करें. दैट विल बी अ बोनस, अ ब्राउनी पॉइंट फॉर यू. और अगर आप मुंबई से है देन आप गुजराती और मराठी अगर आप फ्लुएंट है तो आप ये लैंग्वेजेस अपने सीवी में ज़रूर ऐड करें. ऑल्सो you need your minimum educational qualification you need is high school, that you should have high school certificate. And also swimming is mandatory because वहाँ आप for assessment they will see मतलब आपको भेजा जाएगा swimming के लिए. So अभी वो ये लोग अप्रैल में अपना असेसमेंट स्टार्ट करने वाले हैं. सो स्टिल यू गाइस हैव टाइम. आई वुड सजेस्ट यू दैट गो फॉर स्विमिंग क्लासेस. एंड
at least be fearless when they send you for the assessment. No visible tattoos. Of course, you can have tattoos, but those should not be visible, not visible while you are wearing the uniform. So, search the uniform कि आप देखिए स्विस एयर की यूनिफॉर्म क्या है और इस हिसाब से आप देखिए कि आपके उस विजिबल पार्ट में कोई टैटू नहीं होनी चाहिए. सो एज आई सेड कि अप्रैल या फिर मिड अप्रैल में वो लोग अपना असेसमेंट स्टार्ट करने वाले हैं. सो आप लोग ये सब कुछ प्रिपेयर कर रखें. उसके लिए I'll mention all the documents that are mandatory जो आपको रखनी जरूरी है अप्लाई करने से पहले. सबसे पहले तो आपका सीवी होना बहुत जरूरी है. एक बहुत अच्छी सीवी बनानी है और जो लैंग्वेजेस मैंने बताई थी वो आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा. एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स. मैंने अपने इंडिगो वाली एक वीडियो में मेंशन किया था कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो कैसा होना चाहिए. लाइक फॉर्मल अटायर होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए. ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में मेंशन की थी. आप अगर चाहें तो वो वीडियो भी एक बार देख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए. And the third document that you must have is Indian passport. आपके पास passport होना चाहिए. And again, residential address. आपका residential address होना चाहिए मुंबई या दिल्ली का. दिल्ली से अगर है तो गुड़गांव हरियाणा, नोएडा, ये सारे जगह के होंगे residential address that it will work. आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ एनी, आई मीन इफ एप्लीकेबल. अगर आप मैरिड है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है. एजुकेशनल सर्टिफिकेट में मिनिमम हाई स्कूल की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए. अगर हायर एजुकेशन है, लाइक आप अगर ग्रेजुएट है तो आप उसके भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, बट हाई स्कूल सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए. एंड द लास्ट थिंग इज शॉर्ट मोटिवेशन लेटर. इसके लिए आपको A4 साइज पेपर चाहिए. 2110 इन x 297 इसका रेशियो दिया है पेपर का. आप इस पे मोटिवेशन लेटर अपना आप लिख सकते हैं. here it is not mentioned कि आपको टाइप लेटर चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड है या फिर रिटन, हैंड रिटन. सो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप हैंड रिटन लिख लो और आप उसको टाइप करके भी रेडी रखो. And the question that is mentioned for this letter is, what sets Swiss apart from other airlines? I would repeat this again. What sets Swiss apart from other airlines? So आपको इस टॉपिक पे अपना ये बनाना है. आप अपने स्किल्स मेंशन करें कि आपको आपके स्किल्स इस एयरलाइन के लिए भी कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं फॉर ग्रोथ एंड ऑल ऑफ दैट. और आपको बताना है कि हाउ स्विस इज डिफरेंट. सो आप फर्दर रिसर्च अपने करें. मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है कि क्या 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 स्विस एयर बेसिकली क्या है इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो. And now coming to the salary expectation. So, अगर आपका इंडिया के बाहर का बेस होता, लाइक स्विस एयर का बेस, अभी तो ये लोग इंडियन कैंडिडेट्स हायर करें मुंबई और दिल्ली के लिए. सो अराउंड 1.5 to 2 lakhs एक्सपेक्टेड सैलरी है. अगर आप इंडिया के बाहर आपका बेस होता तो आपकी सैलरी अराउंड 3 lakhs होती. बट दिस इज वेरी गुड सैलरी आई वुड से, बिकॉज आप अपने घर के पास रह रहे हो, घर पे रह रहे हो, एंड यू आर गेटिंग दिस अमाउंट. सो इट्स रियली ग्रेट एंड just go for it. And all the very best to all the candidates. And if you have any doubt, you can comment down in the comment section. And also I would request you to please share this video with your friends, and also please subscribe my channel. So see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye.